आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम देखते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में किस टाइप के सम को हम डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास तीन कंपनी के पेन हैं, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। आपके पास ए कंपनी से चार पेन हैं, बी कंपनी से आपके पास छह पेन हैं और सी कंपनी के आपके पास पांच पेन हैं। अब आपको कुछ लिखना है और उसके लिए आपको एक पेन सेलेक्ट करनी है। तो आपके पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं एक पेन सेलेक्ट करने के लिए? क्योंकि आपके पास ए के कंपनी के चार पेन हैं, बी कंपनी के छह पेन हैं, सी कंपनी के आपके पास पांच पेन हैं, तो आपके पास टोटल 4 + 6 + 5 15 पेन्स हैं आपके पास। तो इनमें से कोई भी एक पेन सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 15 ऑप्शन है, 15 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। अब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ी-सी डिफिकल्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। अगला एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, व्हाट टू वियर। आपके पास शर्ट्स है ऑप्शन में, टी-शर्ट ऑप्शन में है। टी-शर्ट में आपके पास 3 कलर के टी-शर्ट है, व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन। शर्ट में हम देखें तो आपके पास 4 कलर के शर्ट हैं, रेड, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन। अब आपको या तो शर्ट पहनना है या तो टी-शर्ट पहनना है। तो आपके पास 4 शर्ट है और 3 टी-शर्ट है। तो आपके पास टोटल कितने वेयर करने के लिए ऑप्शन है? 4 फॉर शर्ट्स एंड 3 फॉर टी-शर्ट्स। So total you have 7. So you can choose any of these 7 on that particular day. जिस दिन आपको ये इनमें से कोई ऑप्शन लेना है तो आपके पास 7 ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। जब भी हमें सिलेक्शन करना है या कोई चीज अरेंज करना है, तो वहां पे हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। मेन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो फॉर्मूला है, जो थियरीज है, उसको स्टार्ट करने के बाद हमें प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। जब हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि जो काउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिसको हम एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल भी बोलते हैं, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग provides an efficient way of finding the number of different ways to carry out two or more activities either simultaneously or successively one after the other। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था कि एक के बाद दूसरा आपके पास ऑप्शन था। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमें एक साथ में करनी पड़ती है, पैरेलल करनी पड़ती है। तो हम धीरे धीरे एग्जांपल के थ्रू इजी से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नाउ हम आते हैं, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सपोज वन ऑपरेशन कैन बी डन इन m ways, another option can be done in n ways with no common way amongst them. In this, if one operation is to be performed, then there are m plus n options to be ahead। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास चार पेन हैं, एक कंपनी के, दूसरी कंपनी के पांच पेन हैं। अगर आपको दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है तो 4 + 5 9 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बोलते हैं। ना इसमें ध्यान में हमें ये रखना है कि अगर हमारे क्वेश्चन में और वर्ड आ रहा है तो हम एडिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, आइदर दिस और दैट। इसके पहले हमने एग्जांपल में देखा था कि टी शर्ट और शर्ट्स थे। टी शर्ट और शर्ट दोनों में से एक ही पहनना है तो वहां पे और आया, तो वहां पे हम एडिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ध्यान में यही रखिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में केस वन और केस टू आ रहा है या ऑप्शन पहला या तो दूसरा ऐसा कुछ आ रहा है, तो आपको वहां पे एडिशन प्रिंसिपल यूज करना है। अब एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन रूल, यहाँ पे अगर आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शन, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया था कि आपके पास तीन कंपनी है,
वहां पे तीन ऑप्शंस, मतलब तीन कंपनी के पेन के ऑप्शंस थे आपके पास। तो जब कभी भी आपको दो से ज्यादा ग्रुप बन रहे हैं जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, पिछले एग्जांपल में हमने पढ़ा था टी शर्ट और शर्ट का, वहाँ पे दो ही टाइप थे। पेन की कंपनी का हमने पढ़ा था तो वहाँ पे तीन टाइप थे, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, तीन कंपनी के पेन थे आपके पास। तो जब कभी भी दो से ज्यादा होता है या थ्री या मोर होता है, तो वहाँ पे भी सेम, जैसे हमने एम प्लस एन दो ऑप्शन थे, तो पहले में एम ऑप्शन है, दूसरे के लिए एन ऑप्शन है। तो जब कभी भी आइदर दिस और दैट, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। दो ऑप्शन है, दोनों के ऑप्शंस को प्लस कर देंगे। अगर आपको दो से ज्यादा ऑप्शन है, थ्री या मोर है, तो अकॉर्डिंगली आप वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रिंसिपल में यही बताया गया कि आपके पास अगर पहला काम के लिए एम है, दूसरे के लिए एन है, तीसरे के लिए आर है, आइदर और का क्वेश्चन है कि आइदर दिस और दैट, then number of options, total number of ways of doing that will be m plus n plus r। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंपनी का, पेन का, जिसमें आपको पहली कंपनी के एक, ए कंपनी के कुछ पेन थे, बी कंपनी के कुछ पेन थे, सी कंपनी के कुछ पेन थे। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि तीनों को हम ऐड करेंगे, जितने पेन्स हमारे पास हैं, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज वी आर हैविंग। बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन था कि आपको कोई एक पेन सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग था या तो आप कंपनी ए का पेन यूज करेंगे, या तो कंपनी बी का पेन यूज करने वाले हैं, या तो कंपनी सी का पेन यूज करने वाले हैं। जब कभी भी बीच में और यह वर्ड आता है, देन आपको एडिशन प्रिंसिपल यूज करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। चलते हैं हम आगे अभी। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द ड्रॉन कार्ड इज अ स्पेड और क्लब। सी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे और वर्ड आया हुआ है। दैट मीन्स ये केस एडिशन प्रिंसिपल का है। काउंटिंग प्रिंसिपल में दो थियरम है, दो रूल्स हैं, वन इज एडिशन, अदर इज मल्टीप्लिकेशन। अभी हम एडिशन पे फोकस कर रहे हैं। एडिशन का जब आपको वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो बीच में आपको और वर्ड दिखेगा या केसेस आएंगे, आइदर दिस केस और दैट केस। तो यहाँ पे और है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल यूज करना है। अब ये 52 प्लेइंग कार्ड्स में कितने स्पेड होते हैं? तो टोटल हमारे पास चार टाइप के कार्ड होते हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। तो स्पेड 13 होता है, क्लब भी 13 होता है। सो स्पेड के हमारे पास 13 कार्ड्स हैं, क्लब के हमारे पास 13 कार्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स भी है 26। तो ये 26 कार्ड्स हो गए। So we have to select, yeah, we have to take one card from the pack। तो हमारे पास इस 26 में से कोई एक लेना है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है? टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस वी आर हैविंग दैट इज 26। हम जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो वी राइट नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग पेड कार्ड, दैट इज 13। नंबर ऑफ सेलेक्टिंग क्लब कार्ड, that is again 13। So total number of option, a total number of ways of selecting a card which is either spade or club, that will be 13 plus 13, that is equal to 26. This way we will write our answer. Orally we can tell the answer, but when it comes to writing the answer, you have to write the first thing। को आप कितने तरीके से कर सकते हो, कितने ढंग से स्पेड कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, क्लब के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, देन आप उसको टोटल करेंगे और आप बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल।
A teacher wants to select a class monitor in a class of 30 boys and 20 girls. How many ways can the monitor be selected if the monitor must be either girl or a boy? ध्यान से देखिए यहाँ पे फिर से वही or word आया है. That means either girl, so you have to select either a girl or a boy. So how many options do you have to select one girl? How many options do you have to select one boy? That matters a lot first. In the question they are saying आपके पास 30 boys हैं. So number of boys, that is 30. That is a boy can be selected in 30 ways. Number of girls are 20. A girl can be selected in 20 ways. लड़के को एक लड़के को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 30 ऑप्शन है, 30 ऑप्शंस हैं. एक लड़की को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 20 ऑप्शंस है. क्वेश्चन में है या तो लड़की सेलेक्ट करना है एक आपको, या तो एक लड़का सेलेक्ट करना है. जब कभी भी और वर्ड आएगा तो आपको क्या करना है, दोनों के ऑप्शन को ऐड कर देना है. तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, total number of ways that is going to be 30 plus 20, that is equal to 50 ways. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ध्यान में यही रखना है आपको बार बार कि क्वेश्चन में आपको और आ रहा है तो एडिशन रूल अप्लाई करना है. अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं. Sunil has 4 ball pens of one company and 3 ball pens of another company. How many ways ही कैन सेलेक्ट अ बॉल पेन? जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था 3 कंपनी थे. यहाँ पे सुनील के पास जो 4 पेन है वो कंपनी फर्स्ट के हैं और दूसरी कंपनी की उसके पास 3 पेन है. तो नंबर ऑफ पेन्स ऑफ फर्स्ट कंपनी, that is 4, and number of pens of second company, that is equal to 3. So total number of pens is 7. So total number of pens is equal to 7. Therefore, Sunil has 7 options or ways to select a pen. Is it clear? I hope the concept is very clear. Let us go to the next sum. अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं. अभी हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं. दूसरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. इफ वन operation can be carried out in m ways followed by the second operation that can be carried out in n ways, then these two operations are independent and they can be performed, they can be carried out into m into n ways. ध्यान में ये रखना है कि एक एक्टिविटी खत्म होने के बाद दूसरी वहीं से स्टार्ट होती है. और ये क्वेश्चन में एंड हमेशा ध्यान रखना आपको. अगर एंड आपके क्वेश्चन में आ रहा है तो आपको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा. अर्लियर हमने आपको बताया था कि अगर और क्वेश्चन में आता है तो आपको वहाँ पे एडिशन रूल अप्लाई करना है. एंड आता है तो आपको मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल दोनों आपको अप्लाई करने पड़ सकते हैं. सो आपको केवल ध्यान में ये रखना है कि आपको कब एडिशन रूल अप्लाई करना है, कब मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है. तो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे.
और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि एंड दिखा क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन रूल को कैसे यूज करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। आइसक्रीम आपके पास आने वाली है, या तो वो कप में आएगी या तो कोन में आएगी। ये दो ऑप्शन है। आप रेस्टोरेंट में गए हैं, वहां पे आइसक्रीम आपने ऑर्डर किया, आइसक्रीम के लिए या तो कप में आएगा या तो आपको कोन के फॉर्म में आएगा। अगर आपके पास वहां पे तीन टाइप की आइसक्रीम अवेलेबल, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो आपके पास टोटल कितने वेज में, कितने ढंग से आपके पास ऑप्शंस हैं, या फिर आप ये बोलो कि जो सर्व करने वाला है उसके पास कितने वेज हैं कि आपको वो ला के आइसक्रीम दे। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास, अगर हम कप में ले रहे हैं, कप वनीला, कप में चॉकलेट फ्लेवर एंड कप में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आया। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ये हमने कप का कॉन्सेप्ट यूज किया था। अभी हम उसके बाद, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोन में हमारे पास, कोन के लिए हमारे कोन वनीला, कोन में हमें चॉकलेट एंड कोन में हमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस, या फिर जो सर्व करने वाला बंदा है उसके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। तो अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, सो देर आर 6 पॉसिबल वेज, 6 possible ways to serve the ice cream. Is it clear? नाउ अगर हम यहाँ पे दूसरे ढंग से देखें, तो आपके पास या फिर जो सर्व करने वाला बंदा, उसके पास सबसे पहले है कि या तो वो कप लेगा या तो कोन वाला फॉर्मेट में जाएगा। या तो कप में आइसक्रीम देगा या तो कोन में आइसक्रीम देगा। तो आइसक्रीम देने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है? फर्स्ट केस में उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो कप में देगा या तो कोन में देगा। सो फर्स्ट थिंग can be done in two ways, that is either cup or cone. Now one thing is done. Now this, the person who is serving is now going to decide whether he have to give vanilla flavor, chocolate flavor or strawberry flavor. So now coming on the basis of flavor, there are three options. That is the second thing we will achieve. First thing was to selecting either cup or cone type. Now the question is flavor. So second thing we call that. Second thing can be done in three ways. ये जो सेकंड थिंग है, दैट मीन्स आइदर उसको फ्लेवर, जो फ्लेवर के बेसिस पे उसको डिसाइड करना है बंदे को, तो या तो वनीला फ्लेवर लेगा या तो चॉकलेट फ्लेवर लेगा तो या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेगा। सो अभी हम देखेंगे। सो ये टू और ये थ्री जो ऑप्शन, फर्स्ट के लिए 2 वेज था, सेकंड के लिए 3 वेज था, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे दैट विल गेट मल्टीप्लाइड। टोटल number of ways, that is going to be 2 into 3, that is 6. Now, I have given you the explanation of that. Here we have the 6 option. Cone vanilla, sorry, cup and vanilla flavor, cup and chocolate flavor, cup and strawberry flavor. Then cone and vanilla flavor, cone, chocolate flavor, cone, strawberry flavor. So if we count the total number of ways here, there are 6. Now here it is 2 into 3, that is 6. Now why we need uh, addition theorem or multiplication theorem? Because these counting principle help us to find out the answer for the complex situation. Now here there were only two options for selecting either cup or cone and only three flavors. Suppose the number of options goes on increasing, then it becomes difficult to list down the all possible options and count them. Like let us take the same example here. Suppose for doing the first thing, there are 2 ways and there are 10 flavors available to you.
देन कप में भी उसको 10 फ्लेवर्स दिए जा सकते हैं, फ्लेवर वाले आइसक्रीम दिए जा सकते हैं। एंड कोन में भी 10 टाइप जो फ्लेवर्स हैं वो भी दिए जा सकते हैं, तो 10 and 10 20 हो जाएंगे। तो 20 की लिस्टिंग करनी थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट होगी, जैसे जैसे सिचुएशन डिफिकल्ट होगा, प्रॉब्लम जो है वो डिफिकल्ट आता जाएगा। तो इस ढंग से हमें काउंट करना, जैसे हमने लेफ्ट साइड में आपको करके दिखाया हुआ है, अगर इसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो ये धीरे धीरे डिफिकल्ट होता चला जाएगा। इनडायरेक्टली हमें वो मैथमेटिकल फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, किसी शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम डायरेक्टली पता कर पाएँ कि हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इसकी वजह से हमें प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने पड़ता है, जो हमारे इस काम को थोड़ा-सा आसान कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे बताया मल्टीप्लिकेशन रूल, आपको पहले 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे, आइदर कप और कोन। उसके बाद जब ये चॉकलेट फ्लेवर की बात है तो वहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो 2 3 ज़ा 6, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इज़ 6। I hope the concept is very clear to you all. You have understood this one. Let us go to the next. यहाँ पे हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, अस्यूम कर लो, उसके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट टाइप के, और सेकंड टाइप को हमने एस से डिनोट किया है, उसको S1 and S2 options है। How many options he have to do both the things P1 and S1, P1 and S2 like that? तो फर्स्ट थिंग के लिए उसके पास 3 ऑप्शंस है, सेकंड के लिए उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। सो हियर फॉर द फर्स्ट थिंग, how many options he has? That is a P1, P2 and P3. That is 3 ways, 3 options he have. And for the second thing, he has 2 options. That is, here I will list it. Here it is S1 and S2. Is it clear? So here he has only 2 ways. That is 2 ways to do the second thing. So total number of ways, that is going to be 2 into 3, that is 6. If you want, you can count these here options. These are the 3 options plus 3 and next 3. The total number of ways, the total number of options which he's having is going to be 6. Let us go to the next. Extended multiplication principle. जैसे हमने extended addition principle पढ़ा, वहाँ पे क्या था, if there are more than 2 uh, things to be done, there was m plus n concept. For the more than 2, it was m plus n plus r, like that. Similar in the case of multiplication here also. In the case of 2, it is m into n. If it is more than 2, it will go on increasing like that, m into n into r, like that. The first thing can be done in m ways, second thing can be done in n ways, third thing can be done in r ways. Then the total number of ways of doing all those things together is going to be m into n into r. So this is the extended principle. Let us go to the next. Here is a very interesting question. Sabnam has 2 school bags, 3 tiffin boxes, and 2 water bottles. How many ways can C carry these items, choosing one from each? And this is a very, very interesting thing. Now, Sabnam had the first thing to choose, that is either bag number 1 or bag number 2. Here it is going to be bag 1, bag 2. Now coming to the second part, that is a tiffin. She has 3 options, a tiffin 1, tiffin 2, and tiffin 3. Let us see here, T1, T2, and T3. Now, after that, they're saying that she has 2 bottles, water bottles. Now, if here we can, then it will be like 2 here, W1, W2 we can name, and here also W1 and W2. As I have done for the B1, similarly, we will have for B2 also.
It is going to be three branches from here. It is going to be T1, T2, T3. From here, we will have two options here. That is W1, W2. Similarly, from T2, two options, W1, W2, and from T3, two options. It is going to be W1 and W2. So for the first thing, Subnum has two ways to select pool bag, three ways for tiffin. As she has three tiffins, so she can select any of them. So she has three options, three tiffin boxes, three ways to select tiffin box. Now, coming to the third thing, that is water bottle. She has two water bottles, so that can be selected in two ways to select water bottles. So how many options she has? As the question says, it is a continuation. First, he has to select bag and then tiffin and then water bottle. The question is, it is a and first thing and second thing and third thing. So first thing can be done in two ways, second thing can be done in three ways, third thing can be done in two ways. The total number of ways of choosing the one of the item from each here is going to be 2 into 3 into 2. 2 threes are 6, 2s are 12. So Subnam has 12 options to select bag, tiffin box, and water bottle. Now, when these numbers will go on increasing, it becomes difficult to do the calculation. See here, if you look at this one, while making this diagram, we call this as a tree diagram. This diagram was not very neat and clean. Suppose the branching is more in the place of like here three tiffin boxes. Suppose there are four tiffin boxes, and in the place of water bottle, which is two, it is four. Then it becomes very complicated diagram. Now, if we have proper planning of doing the making the diagram, it may look little bit better, but it is going to be the complicated. Hence, the rule which we call that as a multiplication rule here, that will be much more easier to come to the final answer in the place of making a tree diagram and coming to the conclusion from there by counting the number of options available from the tree diagram. So it is better to use the fundamental principle of counting, whether it is addition rule or multiplication rule, that will depend upon the question. आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो हम आपको बता रहे थे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन रहा था। दो बैग थे, बैग वन एंड बैग टू, three tiffin boxes as T1, T2, T3 here, T1, T2, T3. Then the water bottle one, water bottle two. If you go on like making like this, so there are total 12 options available. If you want, you can count here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So these are the 12 options. If you want to list them, these are going to be the 12 options. But when number of articles and number of options go on increasing, it becomes very difficult to make the tree diagram and explain how many options he has, as the Sabnam has. So it is better to use the fundamental principles of the counting, whether it is addition rule or multiplication. Let us go to the next concept. Here I have taken the example. Suppose five chocolates of the different type are to be distributed amongst the four children. There is no condition on how many chocolate a child can get. It may be the zero chocolate for any children. So here the question is how many different ways are possible. The condition says that there is no condition on how many chocolate a child can get. Now there are four children and five chocolates. So first chocolate can be given to any of these four children. Any of
four children. So therefore, there are four ways. Similarly, second chocolate, it can be given in same way. Chocolate can be given in four ways. Third chocolate can be given in four ways because they're saying any number of chocolate can be given to anyone. This is the four. The next one, that is fourth chocolate, can be given in four ways. And similarly, the fifth chocolate can be given in four ways. So, according to fundamental principle of counting, how many options he has? For the first thing, four ways. For the second, four ways. For the third, four ways. For the fourth chocolate, four ways. And for the fifth chocolate, four ways. So it is going to be 4 raised to 5 ways to distribute the chocolate among the four students, the four children. I hope the concept is clear. If you want, you can just multiply the 4 into 4 into 4 into 4. It is going to be 16 into 16 into 4. You just go on multiplying, you will get the final answer. Let us go to the next concept now. आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे. यहाँ पे फिर से एग्जांपल्स दिया गया. How many three-digit number can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 6? If repetition is allowed and if repetition of the numbers are not allowed. These two are the very important concept you need to understand. In the life, you will have similar type of questions. Not one, two, there are many. Now here they are saying they want three-digit number. When it comes to three-digit number, let us see the example before starting the solution of this one. If I say 0, 2, 3, then this is not a three-digit number, it is two-digit number. We have written three-digit, but this 0 will be ignored. That will not be counted. So whenever you are making a three-digit number, you have to make sure that this 100th place should not be 0. Or whether it is a three-digit, four-digit, or five-digit, the last digit that is opposite to the unit place going the left side, and whatever comes as a last digit, it should not be 0. Now, using the concept here, they're saying repetition is allowed. If it is allowed, it's okay. For the first place, case one, we will take the first sign and the first type. That is repetition is allowed. If it is allowed, first place, second place, and third place. Try to understand diagrammatically. For the first place, we cannot take 0. So we have either 1, 3, 5, or 6. So out of these four options, we can select any one for the 100th place. So for the 100th place, we have four options. Now, this 0 can be taken for the 10th place and unit place. And they're saying repetition is allowed. We have to consider the number which is already considered. Repetition is allowed. That means the number which is considered here, that can again be considered for the next thing, next round. Now, here we had about to select one. That should be non-zero. So how many non-zeros we have? Sorry, how many non-zero numbers we had? That is 1, 3, 5, and 6. तो ये चार नंबर हमारे पास ऑप्शन में थे. तो हमारे पास चार ऑप्शंस थे. Now
अब हमारे पास टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, नंबर्स रिपीट हो सकते हैं। तो हमारे पास टोटल अब कितने हैं इंक्लूडिंग जीरो? हमारे पास 5 ऑप्शन। सो इसके लिए टेंस प्लेस के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, यूनिट प्लेस के लिए भी हमारे पास 5 ऑप्शन है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो जाएंगे, क्योंकि हमको 3 डिजिट नंबर बनाना था। पहला 100 प्लेस, then tens place, and then unit place, and RI. And RI, that means we have used the multiplication theorem. Let us see that. According to fundamental principle of counting, क्या होगा आंसर? It is going to be total number of ways, total number of 3 digit numbers, that is going to be 4 into 5 into 5. 4 5 are 20, 25 are 100. Now, coming to the second type, second question here. Repetition is not allowed. If repetition is not allowed, the first, that is hundredth place, here we will write repetition is not allowed. If it is not allowed for the first place, second place, and third place, this is hundredth place, this is tenth place, this is unit place. Here you can also write this is hundredth place, this is tenth place, this is unit place. Now they are saying that it is a 3 digit number. So the third place, that is the hundredth place, cannot be zero here because zero is given in the option and we have to take care that zero should not come to the hundredth place. So there are 4 options available for the other places. Sorry, 4 other numbers are available for the hundredth place. Now they're saying the repetition is not allowed. The number which is selected once will not be taken again. So out of these 4 numbers, one of the number has been selected. So we will now for the tenth place we have total 5 options here. Out of these 5 options हमारे पास एक option तो हमारे 100 place के लिए यूटिलाइज हो गया, उसको हम दोबारा नहीं लेंगे। सो 5 में से एक कम हो जाएगा तो हमारे पास 4 options अवेलेबल हो गए। नाउ अब हमने 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए, एक 100 place के लिए सेलेक्ट कर लिया, एक 10th place के लिए सेलेक्ट कर लिया। टोटल हमारे पास 5 numbers थे, 5 में से 2 नंबर सेलेक्ट हो गए। हमारे पास बचे कितने नंबर है? 4 numbers। तो यहाँ पे हो गए थे, 5 में से 2 चले गए तो बचे कितने हैं? 3 है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, according to fundamental principle of counting, total number of total number of 3 digit numbers, that will be 4 into 4 into 3. 4 4 the 16, 16 4 the 16 3 the 48. So we are having the 48 possible 3 digit numbers using these 3 digits of these 5 digits. The condition was the repetition was not allowed. I hope the concept is very clear. I will repeat the concept again here. This is the new concept for you. Always remember whenever zero is given for the selection, make sure that it should not go to the opposite side, that the last place opposite to the unit place. Because as I have given you the example here, first exam हमने आपको बताया 0 2 3 लिया, 0 2 3 में हमने 3 digits लिया है, 0 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया, but 0 at the last place, that is here in the case hundredth place, will not be considered. It will be assumed as only 2 digit number, that is going to be 2 and 3, that is 23. So whenever you have been given a zero, you have to be extra alert. आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जीरो नंबर आपकी यूनिट पर, सॉरी, अपोजिट टू द यूनिट, दैट इज लास्ट प्लेस जो है, उसको हम 10 100 1000 जो भी प्लेस लास्ट होगा उस प्लेस पे हम जीरो को कंसीडर नहीं कर सकते।
उसकी वजह से आप देखेंगे तो 5 नंबर हमारे पास थे, 5 में से एक हम जीरो के लिए पहले प्लेस पे नहीं ले सकते थे, दैट इज 100 प्लेस पे। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि रेपिटेशन अलाउड है, दैट मीन्स जो नंबर हमने हमने पहले सेलेक्ट किया है वो भी हमारे लिए सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। तो सेकंड ऑप्शन के लिए, दैट इज टेंथ प्लेस के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन, यूनिट प्लेस के लिए 5 ऑप्शन। जब बात आएगी टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स when repetition is allowed is going to be 4 into 5 into 5, that is 100। अब जब हम बात करेंगे रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, जब भी रेपिटेशन नहीं अलाउड है तो आपको ध्यान रखना है कि एक नंबर जो एक बार सेलेक्ट हो गया वो दोबारा सेलेक्ट नहीं होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा 100 प्लेस के लिए हमारे पास 1 3 5 6, इन चारों नंबर में से कोई भी एक हम वहाँ पे ले सकते हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। अब हम 10th प्लेस की बात करते हैं, तो 10th प्लेस पे उन्होंने कंडीशन डाल के रखा कि जो नंबर एक बार सेलेक्ट हो गया दोबारा नहीं सेलेक्ट हो सकता। अब हमारे पास यहाँ पे जीरो भी अवेलेबल हो गया है, 0 1 3 5 6, इन 5 नंबर में से कोई एक नंबर जो है अदर देन जीरो जाके 100 प्लेस पे बैठ गया है। तो अब हमारे पास ये 5 में से एक पोजीशन कम हो गई, दैट मीन्स हमारे पास अभी 4 ही एलिमेंट बचे हुए हैं। उन चारों में से किसी को भी हम 10th प्लेस पे ला के रख सकते हैं। और जब बात आएगी यूनिट प्लेस की, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो दो नंबर ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, दैट वाज 100 प्लेस के लिए और 10th प्लेस के लिए। तो बचा जो है 3 नंबर्स बचे हुए हैं हमारे पास यूनिट प्लेस के लिए। सो यूनिट प्लेस कैन बी सेलेक्टेड इनटू 3 वेज। जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई करेंगे उस पर, so we have to multiply all these 3 numbers, that is 4 4 and 3, and we will get 4 4 the 16, 16 3 the 48. We had got 48 as the answer. I hope the concept is very clear. आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर से। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए, और ध्यान रखिए जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स से डरना नहीं है। वी हैव टू फाइट दैट। अगर आपकी सोच है तो आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही इजी होगी। अगले लेक्चर में मिलते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए।